So I am starting with today's discussion, and today's discussion relates to the well-known Navier-Stokes equation. So this equation, I think most of you have at least heard about. So this is a fundamental equation in fluid mechanics, which essentially explains the conservation of linear momentum. Conservation of linear momentum. So which other equation did you see that described this conservation law? Reynolds transport theorem. Anji? Reynolds transport theorem. Conservation of linear momentum. Have you in the previous lectures dealt with this kind of conservation? That is conservation of linear momentum. Try to recapitulate. Reynolds transport theorem से हमने किया तो Reynolds theorem, Reynolds transport theorem was a general theorem. When it was applied to conservation of linear momentum, we called it, if you remember, Euler equation. And this was in which region of flow? Inviscid. Inviscid region of flow. Inviscid region. So when we apply conservation of linear momentum in inviscid region of flow, it is called as Euler equation. But now if we apply the conservation of linear momentum to any region of flow, that is, it includes viscid region also, then that equation finally gives you the Navier-Stokes equation. So this should be clear. That is, what is the motivation behind Navier-Stokes equation? Euler equation could only explain mathematically the phenomena in inviscid region of flow, but as far as actual flow is concerned, there may be certain regions of flow which are not inviscid. That is, the viscous effects are appreciably there in the region. Any doubts to anyone? For instance, you have, say, this aerofoil. I am drawing the streamlines about this aerofoil. Carefully look at these streamlines and let me know in which region can you apply the Euler equation. As I mark this region as A, this region as B, and this region as C. In which region can you apply Euler equation? A and B. A and B. You can apply the Euler equation. So you cannot apply Euler equation in region C. So you need to solve the flow field, the pressure field in this region. And for that you require a more general equation. And that equation finally, which we will derive, is called Navier-Stokes equation. Any doubts to anyone regarding why we are doing this analysis? This is called Navier-Stokes equation, and we will be describing this in today's lecture as well as in the subsequent lectures, because this contains a lot of mathematical stuff that is not difficult, but you need to follow it very carefully, then only you will be able to understand this. So all of you remember this. So this is the starting point of all our analysis. This is the well-known Reynolds transport theorem, and we will be taking into account capital N as, what should I put capital N as? M into V. What will be small n? What will be small n? Small n. What will be small n? Extensive property per unit mass. So what should I write down here? Velocity. 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 So the Reynolds transport theorem actually takes this form like this.
if you remember. Any doubts to anyone? Any doubts? So this was the Euler equation and this is the Navier-Stokes equation. So what you are able to see here, what is the difference in the control volume I have chosen? This is the Navier-Stokes equation control volume and this is the Euler equation control volume. What is the difference? What is the difference? In which region of flow is viscous this? region. This is in which region? In viscous. In viscid. That is why it is called Euler equation. Whereas in case of Navier equation or Navier-Stokes equation, as we will discuss, this can be in any general region, that is in region in which viscous effects are appreciably present. मतलब सर पहले हम लोग जो प्रेशर फोर्सेस और बॉडी फोर्सेस कंसीडर करते थे, यहाँ पे विस्कस फोर्स भी कंसीडर कर लेंगे. हाँ, so you are absolutely correct. So what we will do is, in case of Euler equation, you have surface forces and body forces. What was the surface force in Euler equation? Pressure. Pressure force. Pressure force. What were the body forces? You can have body force in X, Y and Z directions in general. When you derived it for Bernoulli's equation, you have body force only in which direction? Negative? Y. Y. Y direction. Now, what we are doing is, now in case of Navier-Stokes equation, the body force will again can have X component, Y component and Z component. And as far as surface force is concerned, we will have which forces? Pressure force plus which are other force? Viscous force. So this is the only difference between the derivation of Euler equation and Navier-Stokes equation. That is, in addition to pressure force, we have viscous force also as the surface force. Body force term has not changed. It is again having components in X, Y and Z directions. Any doubts to anyone? सर लेकिन बॉडी फोर्स जो माना था हमने उसमें बर्नौली में, मतलब आयलर में, तो उसमें हमने माना था कि खाली उसमें होगा, मतलब एक ही हमने आयलर में, आपको याद होगा, हमने माना था ऐसे कुछ बी वेक्टर होता था बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के आयलर इक्वेशन में. और बर्नौली में क्या माना था हमने? बी एक्स इज इक्वल टू बी जेड इज इक्वल टू 0 और बी वाई किसके बराबर था? माइनस जी. हाँ जी, क्लियर है? यस सर. So in Euler Yes, sir. equation, we could have actually done with, we had all the three components as far as body force is concerned. But in case of Bernoulli's equation, we had only one component, that is in negative y direction, whose magnitude was g. So as the starting point in case of Navier equation, what we have done is, in addition to pressure force, we have also included viscous force. This is the only addition we have made while deriving Navier-Stokes equation. Are you clear? Any doubts? If you remember, what was the Euler equation written down as? If you remember, minus, help me out to write down this Euler equation. What was this? This was Euler equation. What should I write down here? Delving. Do you remember this equation? Yeah, yes, sir. So this was Euler equation. This was the surface force that only had the pressure component. This was the body force. And this was what? Local acceleration, and this was convective acceleration. ये लोकल वाइज टेम्पोरल है ना?
Local or temporal, both names are used for the same, for this particular term. This is also called local as well as सर temporal. इट वाले टर्म के जगह सर वो टोटल डेरिवेटिव भी ले सकते हैं ना? This is also called substantial derivative. You could write down like this also. This thing. This is then called the substantial derivative. Yes. And here should be a row also. So now in addition to this surface force which had only pressure force, in case of Navier equation, we have also added another force that is called viscous force. Clear? Any doubts to anyone regarding what is the motivation behind studying Navier-Stokes equation? सर क्वेश्चंस में सर कैसे पता लगेगा कि सर नेवियर-स्टोक्स के बारे में पूछा है कि ये आर्डिनल इक्वेशन के बारे में पूछा है? For instance, if I ask you, I have already given you a question that if this was an aerofoil, and you were told to find out the velocity field in A region or in B region, which equation will you use? Euler's equation. Euler equation. If C region is told, then Navier-Stokes equation. Navier-Stokes. But Navier-Stokes कुछ दिया equation होगा is ना सर that कि general friction that is base by putting the viscous term equal to 0 in Navier-Stokes equation, it will turn to what? Euler equation. So Euler equation is just a special case of Navier-Stokes. Navier-Stokes equation in which the viscous term has been put equal to 0. सर Navier-Stokes भी मतलब कि incompressible flow के लिए होगा? Navier-Stokes is again an approximate equation, that is not a general equation. We will see to it that it is valid only for incompressible fluids. Navier-Stokes, but Navier equation is valid for all kinds of fluids, whether it is compressible, incompressible, whether it is Newtonian or non-Newtonian. We will look into it why. सर ये भी कह सकते हैं क्या जो Navier-Stokes equation है वो मतलब frictionless Navier-Stokes equation is known as Euler's equation? Yes. So Navier-Stokes equation for inviscid region of flow is what? Euler equation. That you will see also. When you derive this equation and then you try to put the viscous term equal to 0, it automatically gets converted to Euler equation. Any clear? Any doubts to anyone? And this is, so be careful in this. I am coming to a point which will be important and which will be very helpful when you study Navier-Stokes equation. How many of you are able to comprehend this term? What is this? This is simple. Reynolds transport theorem applied to conservation of momentum. What kind of equation is this? This is a vector equation. Can I write down this vector equation into equivalent scalar terms? Components. So please try to see what is important here. This V is now what? U, V and W. So this is X momentum conservation, this is Y momentum, this is Z momentum. So instead of V, I have U, V, W. And here also, one of the V's has been actually replaced with U, V and W. And the other V is retained. This is very critical and you should know why it is so. Why it is so? Anyone? जी पहला वे है सर वो पार्टिकल के लिए है सर दूसरा वाला सर रिलेटिव है नहीं इसमें ये क्या होता है बेसिकली अगर आपको याद हो दिस इज स्मॉल एन ये पार्टिकल के लिए तो है सर वी
नहीं नहीं, ये किस चीज के लिए? सो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है सर पर यूनिट हाँ मास सर जो आया था वो है। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूं आपको, जैसे ये आपके पास, आपने जब आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कह रहे हैं, कैपिटल एन को आपने क्या लिख दिया? एम वी, और स्मॉल एन को लिख दिया कैपिटल वी। वी। ठीक है, ये तो वेक्टर इक्वेशन होगी। अब अगर स्केलर करना है, मुझे एक्स कंपोनेंट में चाहिए, तो कैपिटल एन क्या हो जाएगा एक्स मोमेंटम के लिए? एम स्मॉल इंटू यू वेलोसिटी इन एक्स एक्स डायरेक्शन, डायरेक्शन और स्मॉल एन क्या हो जाएगा? स्मॉल यू। क्लियर है? तो तभी ये वाली टर्म और जो इसके अंदर होता है एन रो डीवी, तो ये स्मॉल एन को हम यू और वी और डब्ल्यू से रिप्लेस करते हैं। वी डोंट रिप्लेस द अदर थिंग बिकॉज दिस इज एक्चुअली डिपिक्टिंग मास. So mass is a scalar quantity. It doesn't have u v w. It may have any all the components. That is why we are putting v here. ये मास रिप्रेजेंट करेगा कि मास फ्लो रेट? हम मास जैसे m इंटू वो है, m इंटू v है, दिस इज मोमेंटम. यस सर। So this is mass, this is यस velocity. सर। So when you are talking about momentum, say for instance an object was moving in this direction. If I ask you what is the x component of the momentum, what will be x component of momentum? वी cos थीटा। mv cos थीटा। cos theta. What will be y component of momentum? mv sin theta. So what is retained in the components? Mass is retained as such. What has changed is the velocity component. Likewise, in this case, n is momentum. What will be retained here? Mass. What will change here? The velocity. So that is why when I write down the equivalent scalar equations, these are the equivalent scalar equations. So you should be very careful that one of the v's has been replaced with uvw as far as x, y, and z momentums are concerned. And is that clear? Any doubts to anyone? Please ask me if there is any doubt. Yes, sir. Clear? Now, I am now taking the first step to solve Navier equation. Now, what do you think is the practical difficulty in using this equation as such? What is the practical difficulty in using this equation? If you remember Euler equation was this. सर विस्कस फोर्सेस आ रही है तो शायद कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं? सर जैसे एनर्जी वगैरह लॉस हो जाती है, हाँ, हम हीट जो भी निकलती रहती है ना फ्रिक्शन के कारण, तो बीच में यहाँ पे ऐसा हो सकता है कुछ। अच्छा, तो आप ये बताओ, ये आयलर इक्वेशन है जो मैंने लिखी है, ये आयलर इक्वेशन की एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं? What are the parameters that in which this equation has been written down? Pressure, body force, density, velocity. Are all of them measurable or not? Can you Yes, measure sir. pressure? Can you measure velocity? You can measure all of them. But what is the problem here? When I have added Fs, when it is only pressure force, this is like this. But in addition to this, I also have viscous force. So I need to convert that force into what? A measurable quantity. And clear है?
The same motivation was done for in case of Euler equation also. In Euler equation also you have Fs plus Fb. So it is not practical to measure Fs and Fb for each and every fluid element. It is more practical to measure some measurable quantities. So we noted that the surface force was pressure force, the body force was actually essentially forces in x, y and z directions which could be measured. So you have converted the force term into more measurable quantities of pressure and B. Likewise, when you are solving Navier equation, in addition to pressure force, you have a viscous force, and that viscous force actually needs to be converted to a more measurable quantities. If you remember Newton's law of viscosity, what does that state? Newton's law of viscosity. What does? Yes, is equal to Tau xy is equal to mu du by mu du by dy. So this is the shear stress. What about force? Area से multiply Force is करना। given here. It means it must be something like this. So can you measure tau xy practically for each and every fluid element? Is it practical to utilize tau xy? Hanji. Can you measure stresses practically of each and every fluid element when fluid is flowing or not? Anyone? Akash. सर फिर उसमें वो लैग्रांजियन अप्रोच वगैरह लगानी पड़ेगी उसमें। नहीं, लैग्रांजियन अप्रोच की बात नहीं कर रहा। जैसे आपके पास फोर्स है, अगर आपके पास आपको ध्यान में होगा इफ देयर इज, ये ऐसे निकाल सकते हैं एक्स वाई डायरेक्शंस में। कैसे निकाल सकते हो एरिया से प्रैक्टिकली? डिवाइड करके। जैसे फोर्स है, सर अगर न्यूटोनियन फ्लूइड है तो निकाल वेलोसिटी सकते ग्रेडियंट, न्यूटोनियन वेलोसिटी फ्लूइड में ग्रेडियंट कैसे निकालते हो आप वैसे विस्कस सर फोर्स? म्यू पता है सर। सर अच्छा। वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाल लेते हैं उसका। ग्रेडियंट हम लोग निकाल लेते हैं सर। तो अगर यहाँ पे कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, प्रोफाइल पता है सर, अगर हम लोग को वेलोसिटी की तब निकाल लेंगे। अगर ये फ्लूइड पता है तो क्या इसका निकाल लोगे शियर स्ट्रेस? अगर आपको वेलोसिटी पता है तब निकाल पाओगे। अगर वेलोसिटी पता है तभी आप ऐसे करोगे। यस सर। और ये भी पता है तब ऐसे करोगे। यस सर। यस सर। तो ये तो आपको पहले पता हो तब आप ये निकालोगे। हाँ। लेकिन ये तो हमारे अननोन है, यही तो हमारे नेवियर-स्टोक्स से निकल के आएंगे। नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन में या आयलर इक्वेशन में आउटपुट क्या आती है? आयलर इक्वेशन में आयलर इक्वेशन सॉल्व करके क्या मिलता है आपको? प्रेशर फील्ड एंड वेलोसिटी फील्ड। नेवियर-स्टोक्स को भी सॉल्व करके क्या आएगा? प्रेशर फील्ड एंड velocity field. You don't know velocity field and pressure field as such. That is why you are solving this differential equation. So if you don't know that, then how can you find out tau xy? And is that clear? Yes sir. So please remember, force as far as solids are concerned, अगर आपने ध्यान दिया हो कभी, अगर आपको ये फोर्स, सर अगर शियर फोर्स हम लोग सर नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ से टाउ नहीं निकाल पाएंगे, तो सर उससे वो कैसे निकाल पाएंगे, क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्सेस? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। तो what we will have to do if there are forces, then we need to convert them into what? Stresses then should be converted to what? Derivatives of velocity. So it is in this stage that all the variables now in the equation are measurable. तो सबसे पहले फोर्स को आपको स्ट्रेसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फोर्स को स्ट्रेस में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो आप? हाउ कैन यू डू दैट? एरिया से डिवाइड पता होगा सर। So you know that stress into area gives you force.
So you could actually put force is equal to stress into area. What is stress equal to in terms of derivatives of velocity field? What you will apply? Constitutive relationship. Constitutive relationship. So you applied something like this. So what is this? This is the constitutive relationship. This was the dynamics part. This was the which part? Kinematic part, and this was the material property. So starting from force, you are coming to a parameter which is much more measurable. That is, you are converting the force term into a term which includes velocity. And which two steps you follow? First step is you convert the force term to stress into area. When you have stress again is not measurable as such. Then you convert stress into more measurable quantities using a constitutive relationship. And then you finally end up in a measurable quantity, that is velocity. So that the left hand side now contains what? It contains measurable velocity terms. On the right hand side also there is velocity terms. So on both the sides you have measurable quantities. Then you can solve them. Any doubt to anyone? The basic philosophy of invoking the constitutive relationship, the basic philosophy of going from force to stress term. Is that clear? सबको clear है ये? हाँ जी. Is that clear? हाँ जी बताइए आयुष. सर हम लोग को वेलोसिटी पता नहीं है सर, फिर डेरिवेटिव कैसे ले रहे हैं उसका? नहीं ले नहीं रहे ना. We will not take derivative. So this will be a equation in which variables? All will be in which variables? Velocity and pressure. इससे एक आपका प्रेशर फोर्स आई, एक आई आपका विस्कस फोर्स. यहां पे क्या है? वेलोसिटीज हैं. तो वेरिएबल्स कितने ज्यादा हो जाते हैं आपके पास? सर आप नेवियर स्टोक्स के मतलब एडवांटेजेस बता रहे हैं, मतलब कि आयलर के कंपेयर में क्या एडवांटेजेस हैं? मतलब एडवांटेजेस नहीं बता रहा. आयलर इक्वेशन में क्या था? आयलर इक्वेशन में आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करते थे इनविसिड रीजन में. नहीं, क्योंकि जैसे आपने ये बताया कि नेवियर स्टोक्स हम किसी भी रीजन ऑफ फ्लो के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो एक एडवांटेज ही हो गया ना. हाँ वो है एडवांटेज. हाँ वो एडवांटेज है इसका. तभी तो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन इतनी पॉपुलर है कि जो बाकी सारी इक्वेशंस हैं वो सिर्फ इसका एक स्पेशल केस बन जाती हैं. जैसे जो आपने हाइड्रोस्टैटिक्स भी पढ़ा है कि भाई dp by dy is equal to minus rho g, आपने ये पढ़ा है. ये भी नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन से निकल के आ जाता है. सो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन इज द पेरेंट इक्वेशन फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड्स, जिसके अंदर कुछ टर्म्स को आप अगर निग्लेक्ट कर दो तो आप आयलर इक्वेशन पे आ सकते हो, हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन पे आ सकते हो, बहुत सारी इक्वेशंस पे आ सकते हो. सो दिस इज द मोस्ट जनरल इक्वेशन एज फार एज न्यूटोनियन फ्लूइड्स आर कंसर्न, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन. इसमें सर प्रॉब्लम कहां पे आ रही है इसकी डेरिवेशन में अभी तक, कि हमें ये पता है कि जो फोर्स है वो सरफेस फोर्स हो सकती है या बॉडी फोर्स हो सकती है. ये हमें पहले भी पता था आयलर के केस में भी. आयलर के केस में सरफेस फोर्स सिर्फ प्रेशर फोर्स थी और बॉडी फोर्स के कंपोनेंट्स एक्स वाई जी डायरेक्शन में हो सकते थे. ठीक है. अब नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन में प्रेशर फोर्स के अलावा एक और सरफेस फोर्स हमें स्टडी करनी पड़ रही है, वो है विस्कस फोर्स. और विस्कस फोर्स को हमको मोर मेजरेबल क्वांटिटी में ले जाने के लिए हमें उसको पहले स्ट्रेस में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, फिर स्ट्रेस को हमारे को वेलोसिटी फील्ड के किसी डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना पड़ रहा है. तो ये दो स्टेप लगाने पड़ रहे हैं हमें फोर्स को मोर मेजरेबल क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा ना हो जाए. सर आप एक बार ये बता दोगे कि जो स्ट्रेस है वो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी में कैसे, मतलब कुछ एग्जांपल आपको वो हम अभी पढ़ेंगे. जैसे आप ये बताइए. हाँ जी ये एक सेकेंड.
I think Naveen. So Naveen, it is not difficult. It is very simple if you follow common sense. मैं आपको don't panic at all कि इसको पैनिक करने की जरूरत नहीं है. हाँ आयुष, अब आप बताइए क्या कह रहे हैं आप? सर मैं कह रहा था कि जो आप कह रहे थे ना कि स्ट्रेस को आप कन्वर्ट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ उसमें हाँ वेलोसिटी में, हाँ. तो सर कुछ एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा देंगे कि मतलब कैसे, मतलब ऐसा होता कैसे है, मतलब कुछ। जैसे आप क्या करते हैं, आपको याद होगा कि जैसे अब मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको से, आप किसी की विस्कोसिटी आपको पानी की ढूंढनी है. मान लो पानी की विस्कोसिटी ढूंढनी है, आपको Yes, पानी की विस्कोसिटी नहीं पता, ठीक Yes, है, sir. आपको म्यू ढूंढना है, म्यू ऑफ वाटर. हम्म। आप कैसे ढूंढोगे? सर मैं सर टाउ अपॉन डी यू बाई डी वाई मतलब फॉर्मूला तो आपको पता नहीं, तो आप क्या करोगे? अब ध्यान से देखो, अब ये मैं बना रहा हूं टॉप व्यू. ये एक सिलेंडर है जो हॉलो है. दिस इज अ हॉलो सिलेंडर. हॉलो सिलेंडर का क्या है? ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू। ठीक है. और अब मैंने ले लिया एक, ये मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर हो गया. सो दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर. इसका भी ये टॉप व्यू है, ठीक है. अब यहां पे है मेरे पास पानी. इन दोनों के बीच में मैंने क्या भर दिया? पानी, या जो फ्लूइड जिसकी मुझे विस्कोसिटी पता लगानी. यस सर। ठीक है, हाँ जी। ठीक है. अब मैं क्या कर रहा हूं, अब जो ये बाहर वाला सिलेंडर है, मैं इसको मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा से रोटेट कराने लग गया. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा से रोटेट कराने लग गया. तो मुझे बात बताओ, जो यहां पे फ्लूइड एलिमेंट होगा और यहां पे फ्लूइड एलिमेंट होगा जस्ट, वो नो स्लिप में होंगे. यस सर, यस सर। हाँ जी, क्लियर है. नो स्लिप कंडीशन, ठीक है। तो मैं अब ये वाले रीजन को मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ये वाले रीजन को यहां दिखा रहा हूं, ये वाले रीजन को, से दिस रीजन. मतलब जो नो स्लिप में नहीं है, मतलब नहीं नहीं, पूरे रीजन को मैं ये जो दिखा रहा हूं, यहां से यहां तक का मैं एक रीजन दिखा रहा हूं. ये मान लो ठीक है। मैंने ब्लो अप कर लिया यहां पे, ठीक है. तो इसके यहां पे क्या है? ये स्टेशनरी है, ये मान लीजिए स्टेशनरी सिलेंडर है. बाहर वाला रोटेट कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी जो इसके साथ लेयर होगी? जस्ट जीरो. जीरो, v इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो यहां पे u इक्वल टू जीरो कर देता हूं मैं. और यहां पे क्या वेलोसिटी होगी? सर, जो कि ओमेगा r इंटू ओमेगा सर। r इंटू ओमेगा. हाँ जी, क्लियर है. ये यस क्लियर सर, है, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। ठीक है. तो इस रीजन में बेसिकली उस तरह से बन गया ये कि एक लेयर है, उसमें ये वेलोसिटी है, इसकी जीरो वेलोसिटी है, तो ये ऐसे यहां पे वेलोसिटी फील्ड होगी ऐसे. ये समझ रहे हो? यस सर। ठीक है. अब मुझे ढूंढना है क्या? विस्कोसिटी इसकी. क्लियर है. अब मुझे बताइए, इसको रोटेट मैं कैसे करवा सकता हूं? आपके पास कोई मोटर नहीं है, मान लीजिए, आप इसको रोटेट कैसे करवा सकते हैं बाहर के सिलेंडर को? सर मोटर से हुआ। अगर मोटर नहीं है आपके पास घर में, आप क्या करोगे? सो यू वांट टू मेक इट रोटेट, व्हाट विल यू डू? सर मैकेनिकली करना पड़ेगा। मैकेनिकली कैसे कर सकते हो आप? सर कोई शाफ्ट लगा देंगे ना सर, और घुमा दें सर। सबसे सिंपल वे क्या है कि इसके आगे आप इसको आप यहां पे ऐसे कर दीजिए, पुली लगा देंगे। अच्छा, पुली पुली लगा दें, यहां पे वेट कर दे. वो वही कर देंगे। ठीक है ना. तो ये इसको रोटेट करती जाएगी. अगर आपको इसको कांस्टेंट रेट पे घुमाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? अगर ये बाहर का सिलेंडर को कांस्टेंट वेलोसिटी से ढूंढना है, तो हाउ कैन यू मेक श्योर दैट इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट ओमेगा? कैसे करोगे मेक श्योर? टेंशन जस्ट सेम हो सर, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो. एक्सटर्नल फोर्स ना हो. और व्हेन इज वेलोसिटी कांस्टेंट? व्हेन देयर सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू जीरो. जीरो. व्हाट डज दैट मीन? सिलेंडर पे एक तो ये फोर्स लग रही है, टेंशन फोर्स, एंड दैट इज इक्वल टू mg. और कौन सी फोर्स लग उतना रही ही है? फोर्स
सिलेंडर पे फोर्स फ्लूइड लगा रहा होगा पीछे विस्कस की फोर्स, तरफ। विस्कस फोर्स। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। विस्कस फोर्स पता चल जाएगी आपको, जी वो सर। टेंशन के बराबर होनी चाहिए टेंशन के for- बराबर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो इससे आपको क्या पता चल गया? आपको ओमेगा भी पता चल गया इससे। आप आरपीएम मेजर कर सकते हो इसके। यस सर। तो आपको क्या पता चल गया? du बाय dy एट दिस वॉल से दिस। du बाय dy क्या चीज है? व्हाट इज du बाय dy? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइट, विद रिस्पेक्ट टू हाइट जस्ट एट द वॉल। जस्ट एट द वॉल। यस सर। वो स्ट्रेन रेट होगा, बेसिकली वो ओमेगा से रिलेटेड होगा या आर ओमेगा होगा, वो उससे रिलेटेड जी होगा। सर। यस सर। तो आपको व्हाट डू यू नो du बाय dy, you can find out what? Mu. डायनामिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी। विस्कोसिटी। जैसे आपको टॉ इंटू एरिया पता है, ये क्या बराबर है? फोर्स। ये फोर्स किसके बराबर होगी? mg। हाँ जी, क्लियर है? यस। एरिया क्या हो जाएगा? किस पे लग रही है? ये जो कर्व सरफेस एरिया, जी सर। ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच इज इक्वल टू mg। तो आपके पास टॉ की वैल्यू आ जाएगी। इज दैट क्लियर? यस। What about du by dy? What about du by dy at just at the wall? टाउ इज इक्वल टू म्यू इनटू dy बाय dy होता है ना सर, वहां से कैलकुलेट कर लेंगे। नहीं, म्यू तो आपको पता नहीं, यू डोंट नो म्यू, यू डोंट नो du by dy. Can you relate du by dy by the angular velocity? तो du by dy तो r into omega by height हो जाएगा ना? tau mu sir tau du equal to omega dy। Tau सर du by dy हो जाएगा r into omega by height, du by dy will be, r into omega by h या जो भी थिकनेस है। वो थिकनेस है, वो जस्ट, तो ये आपके पास नोन हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। तो शेयर को बढ़ा भी कैसे सकते हो आप? जैसे ओमेगा आपने बढ़ा के। न्यूटोनियन फ्लूइड में पढ़ा था ना कि शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन में क्या था? एक स्ट्रेट लाइन आती थी, ये याद है आपको? शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन रेट में एक स्ट्रेट लाइन आती है न्यूटोनियन फ्लूइड, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम फर्स्ट 2-3 लेक्चर्स। यस सर। यस। तो वो ये ग्राफ आता भी कैसे है कि आपने एक वेलोसिटी पे जब कर रहे हो, इसका मतलब आपने क्या फिक्स कर दिया? स्ट्रेन रेट, दैट इज दिस थिंग। उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या फाइंड आउट कर लिया आपने? स्ट्रेस। स्ट्रेस। लाइकवाइज आपने फिर स्पीड बढ़ा दी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर मेजर कर दिया स्ट्रेस। सो दैट इज हाउ यू गेट द स्ट्रेस स्ट्रेन रेट सर कर्व। r omega से कुछ क्या कह रहे भी हैं? तो करना पड़ेगा ना क्या कह रहे हैं? सर? ये du by dy जो आपने नीचे लिखा है उसमें r omega से भी कुछ डिवाइड करना पड़ेगा ना? हाँ, वो तो उस इंस्टेंट पे जो du by dy है, u क्या हो जाएगा? r ओमेगा, और r बेसिकली आप dy ना लिखो ना, इसको क्या लिखोगे? du by dr, du by dr। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। जो टॉ है वॉल पे, वो किसके बराबर है? म्यू इंटू du by dr एट वॉल, आउटर वॉल। एंड व्हाट इज u? r ओमेगा। सो व्हाट विल बी du by dr? ओमेगा। हाँ जी, इज दैट क्लियर? यस So as you increase the rotation rate, you know that you are increasing what? Strain rate, and you are moving towards right on the curve. So by this experimental setup, you are able to find out what? Stress or strain rate at what? Wall.
So please remember, when you say tau is equal to mu du by dy or tau is equal to mu du by dr, in this experiment you have found it through only at the wall. This is called wall shear stress. हाँ जी, क्लियर है? Any doubts? Any doubts to anyone? हाँ जी, आकाश, any doubts? Ayush? Ayush? No sir, no sir. अब क्लियर है ये? Yes sir. तो आप ये देखिए, स्ट्रेस को सिर्फ वॉल पे फाइंड आउट करने के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन अगर मान लो यहां पे होता एलिमेंट वॉल के इनके बीच में, तो इस पे ये फाइंड आउट हर बार करना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और इसमें तो सब कुछ कंट्रोल था, बट इन एक्चुअल फ्लूइड फ्लो यू डोंट हैव सच कंट्रोल, so you cannot actually practically measure stress, but what you can measure is you can measure velocity at each and every point, and that is why we are converting force to stress and then stress to derivative of velocity, that is the strain rate, and it is the constitutive relationship that helps us to build up relationship between stress and the strain rate, that is the derivative of the velocity component. Any clear है? Any doubts to anyone? सर यही जो कंसेप्ट आप लगाओगे उसमें मतलब नेवियर स्टोक्स के Navier-Stokes में हम एक्सपेरिमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, फोर्स को स्ट्रेस में कन्वर्ट कर देंगे और स्ट्रेस को डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी में। तो सारी इक्वेशन में क्या पैरामीटर रह जाएंगे, सिर्फ वेलोसिटी और प्रेशर, और वो मेजरेबल है। अच्छा, हाँ जी, क्लियर है? ठीक है सर। तो ये हमारी मोटिवेशन थी फोर्स में जो विस्कस टर्म थी, विस्कस फोर्स टर्म, उसको स्ट्रेस में, फिर स्ट्रेस को स्ट्रेन रेट में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर? एंड प्लीज रिमेंबर, तो यहां पे ध्यान में रखना, अब व्हेन फोर्स, viscous force term has been converted to stress term, is there any bounding that whether it is Newtonian or non-Newtonian fluid? फोर्स को जब मैं स्ट्रेस टर्म में कन्वर्ट करता हूं, do I have to make any commitment regarding what is the fluid? यस सर, करनी चाहिए मेरे हिसाब से। यस सर, करनी चाहिए। नहीं, फोर्स को स्ट्रेस में कन्वर्ट कर रहा हूं। जैसे फोर्स को स्ट्रेस में कन्वर्ट, अच्छा तब मतलब कंसीडर करना है? नहीं, नो सर, तब नहीं, तब तो किसी भी फ्लूइड में मैं फोर्स को स्ट्रेस में कन्वर्ट कर सकता हूं। हाँ, तब तो यस सर, यस सर। तो इसका मतलब जब ये स्ट्रेस की टर्म्स में लिखी हुई इक्वेशन, दिस इज वैलिड फॉर व्हाट? ऑल काइंड्स ऑफ फ्लूइड, वेदर इट इज Newtonian or non-Newtonian or Bingham plastic, anything, and that equation is called Navier equation. So when we have actually not committed that what is the fluid, and that can only be up till which stage? Up till the stress stage, because when we want to convert stress to velocity derivative, then we require a constitutive relationship, and constitutive relationship always include what? A material property. So whenever we invoke the constitutive relationship, we have actually made a commitment that that particular formula now holds for that particular material. So please remember, Navier-Stokes equation is valid for Newtonian fluids, because when we go from stress to strain rate, we have used the constitutive relationship that is valid for Newtonian fluids. But when we go from force to stress term, then as such the equation is valid universally. We have not committed anything about the material property, and that equation in that form is called Navier equation.
Is that clear? Is that clear? सर नेवियर इक्वेशन जब हम डिस्कस फोर्सेस से स्ट्रेस में जाते हैं तब होती है, तो सर जब स्ट्रेसेस से वेलोसिटी डेरिवेटिव में जाते हैं हाँ, तब तो वो न्यूटोनियन फ्लूइड्स के केस में अप्लाई हो जाता है। हाँ नहीं, वो जो तब हम लाई होगा ना अगर रिलेशनशिप हम लगाते ऐसे हैं फिर करेंगे। आप ऐसे करते हो ना, जैसे आप ये लिख रहे हो टॉ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, ये कौन सा फ्लूइड है? न्यूटोनियन। यस सर। लेकिन अगर आपने ऐसे लिखा होता टॉ इज इक्वल टू म्यू रेज टू पास समथिंग, सो डी यू बाई डी वाई समथिंग, what will happen? This is not a Newtonian fluid. No. ठीक है ना? तो when you have made this commitment, then it is called Navier-Stokes equation. So Navier was a scientist before Stokes. तो सबसे पहले रेनॉल्ड्स थे। रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम जो है, रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम में वो फोर्सेस में ही थे। जब नेवियर आया, नेवियर ने विस्कस फोर्स को स्ट्रेस में कन्वर्ट कर दिया। फिर और साइंटिस्ट आए स्टोक्स, स्टोक्स ने उनको और मेजरेबल क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर दिया, ओनली फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड्स। दिस इज कॉल्ड नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन। नेवियर को किसी और फ्लूइड के लिए अगर मैं लगा दूं, वो उसके नाम से इक्वेशन होगी, दैट विल नॉट बी नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन। इज दैट सर क्लियर? मतलब जब हाँ न्यूटोनियन फ्लूइड्स का केस आ जाता है तब उसको नेवियर स्टोक का नाम दिया जाता है इक्वेशन को। हाँ, जब सिर्फ स्ट्रेसेस का हो तो ब्लड इज नॉट अ न्यूटोनियन फ्लूइड। तो नेवियर इक्वेशन जब मैं ब्लड पे लगा दूं तो वो आपकी बायो फ्लूइड मैकेनिक्स की इक्वेशन बन जाएगी, उसका कोई और नाम होगा। सो दिस इज सो पावरफुल इक्वेशन, नेवियर इक्वेशन, दैट अगर आपको सेल्स के अंदर फ्लूइड मोशन का आपको पता लगाना है, आर्टरीज के अंदर पता लगाना है, सो डिपेंडिंग ऑन द फ्लूइड प्रॉपर्टी आप नेवियर इक्वेशन से एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना सकते हैं, एंड दैट कैन बी कॉल्ड एज say Naveen Ayush equation, Rajansh equation, or any student name equation if you tend to discover these. So that is how the equations are developed. So I will break for today. We have already run out of time. We will continue with this in the next lecture. So this is very important. Please ask your fellow students also, because this is very important. If this is not clear, the entire fluid mechanics makes no sense. If you learn this, you will not face any problem using CFD and any other future endeavor as far as fluid mechanics is concerned. So I will break for today. We will continue with this in the next lecture. Thank you, sir. Okay then.